Hello dear students, I Bhavana Tiwari welcome you in today's video, and that is today we are going to start our new chapter, that is 7th chapter, coordinate geometry. So coordinate geometry, today we will going to start very first introduction, some important terms. Before that, do like and share the video, do comments and press the bell icon. Okay, now look at here, this is coordinate geometry, your 7th chapter. Now what are the topic you have to study in this chapter? Okay, what you have to study? Distance between any two points. Very first exercise is based on 2 points will be given to you. That is, I've shown you in this. What do you mean by coordinate very first? Coordinate geometry you have studied in 9th class. Co means two ordinates. That means x-axis and y-ordinate and x-axis ordinate. And geometry you have to do. So what do you mean? This means, that means we have to draw a Cartesian plane in this. Okay, coordinate geometry means we have to draw a Cartesian plane. Then any 2 points I am taking in this P and Q, and we have to find the distance between these 2 points P, Q. So let the coordinate of first point be x1, y1 and the coordinate of second point be x2, y2. Okay, and this x coordinate is also known as the abscissa. And the y coordinate is also known as ordinate. Okay, so the other name of x coordinate and y coordinate are abscissa and ordinate. Okay, so these are the two other names of these. So, and this first exercise is based on the distance between any 2 points you have to find. Okay, that formula I will be telling you right now after this. Then second exercise is based on which I have written the third one. So any 2 points will be given to you, and any point which is dividing a line segment in any ratio, that means k ratio 1 I have written generally, it can be divided in 1 ratio 2, 2 ratio 3, it can be divided in 3 ratio 1, it can be divided in 4 ratio 1. So any ratio the point is dividing this line. So you have to find the coordinate of this point which is dividing or cutting this line. Okay. So this one will be your second exercise, and this is known as section formula. Okay, this we will be doing when we will do the exercise. And the third one, the third exercise in this is based on area of triangle. So area of triangle formed by 3 given points. So you will be given 3 points or 3 coordinates, x1, y1, x2, y2 and x3, y3. You have to find the area of the triangle. That will be your third exercise. And believe me, this coordinate geometry is very easy. Okay, so what is the second exercise based on? The coordinate of a point, which divides a line segment joining any 2 points in a given ratio. So we have to find the coordinate of this point. So these are the 3 exercises you have to do in this. First one I told you, the first exercise we will start, that is based on we have to find the distance between any 2 points, okay, which is in the whose coordinates are given to you. Okay, so let us start. Very first we will start with this first exercise for 7.1. what is the basic concepts is required, we will start from there. So let us start that. So let us start. Very first, the distance between any 2 points you have to find, and this is also known as distance formula. Okay, so how you have to do? Very first you will draw a Cartesian plane which you have studied in your 9th class. Okay, so this is your origin. What are the coordinates of this point? 0, 0. So let I am taking 2 points in it, and what are the 2 points? Let the 2 points be P and the second point is Q. So if I say the coordinate of first point be x1, y1 and the coordinate of second point is x2, y2. If I say to you what is the distance between these 2 points? Okay, so you will find by distance formula. That formula I am going to tell you what is the formula. Okay, so now look at here. So what you will do, you will join these 2 points. Okay, we will join these 2 points. So we have to find the distance between there to there. But what is the length of this line segment? Okay, so how you will find it? So kya karo beta? So draw a perpendicular from here to here. This is x1. So that means from here to here, what is the distance x1? यही तो होता है, because in x coordinate, x axis, this is x1, so this is the x1, this is y1. That means if you draw perpendicular from y, so this distance, this is y1. So from here to here, this distance is y1. That's why. Okay, let us find what is the distance x
2. Okay, x2 means till here. तो origin से यहाँ तक की distance. Draw perpendicular. So that means from the origin till here the distance is x2. Okay, and what is y2? From here to here it is y2. That means draw perpendicular from here. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का distance y2 है. That means this distance is y2. This, hope you are clear. This is clear to you because this already you have studied in 9th class. Okay, so now look at here. Let me draw a triangle here. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने I have drawn a perpendicular like this. ठीक है, this was already here. So now please can you find how much is the length of this base? Let me say this point is R. Okay, can you find the length of this base and length of perpendicular? अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल जाती है तो हाइपोटेन्यूस वी विल बी इजीली वी कैन फाइंड बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस, लुक एट हियर, फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज x2. पूरे x2 में से इतने डिस्टेंस माइनस कर दोगे यू विल गेट दिस. तो इसका मतलब x2 में से इतनी डिस्टेंस कितनी है? x1. तो इसका मतलब फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट इज द डिस्टेंस? x2 माइनस x1. क्लियर? x2 में से x1 माइनस कर दोगे, दिस डिस्टेंस यू विल गेट. सेम वे हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस अगर आप हटा दोगे तो यू विल गेट दिस मच डिस्टेंस. व्हाट इज फुल डिस्टेंस? y2. और इतनी डिस्टेंस कितनी है? y1. ठीक है, तो फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट इज द डिस्टेंस? y2 माइनस y1. ठीक है, दिस इज क्लियर ना? सो इन ट्रायंगल PQR using Pythagoras theorem. This I am telling you generally, this will not come for proving. Okay, so this I am telling you because you should know how the distance formula came. So what is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square, that means PQ square is equals to base square x2 minus x1 का square plus perpendicular square y2 minus y1 whole square. अगर ये square को इधर भेजेंगे तो PQ is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो what is the length PQ? अब ये distance PQ कितनी निकल गई? P से Q की distance कितनी निकल गई? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इसी को distance formula कहते हैं. This is only known as the distance formula or distance between any two point. You can do it like this also. इसको x2 minus x1 whole square में लिख सकते हैं और you can write it like this. x1 minus x2 whole square. किसी को भी किसमें से माइनस करो क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस अंदर आएगा तो इट विल ऑलरेडी बी पॉजिटिव. तो दोनों मेथड सही है. y1 minus y2 whole square. Okay. So you can write any of this. Nobody will cut your answer because you can write x2 minus x1 whole square. Same way you can write x1 minus x2 whole square. इसका मतलब x1 में से इसको माइनस करेंगे दोनों x कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 इनका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1. y2 इस ऊपर वाले में से नीचे y को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे. और यू कैन डू इसमें से इस वाले x को माइनस कर दो उसका स्क्वायर कर दो प्लस इसमें से इस स्क्वायर को y को स्क्वायर माइनस करो इसका स्क्वायर कर दो. So both the way the answer will come same. So this is your distance formula. Okay. So let us start this distance formula. Please learn this distance formula. What is the distance between any two points? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. So let us start exercise 7.1 based on this exercise. So the first question is find the distance between the following pair of points. So I have written the first part and third part. Second part I am leaving for you, that similar type you can do the same one. So you have to find the distance between these two points. So these two points is given to you. So that means you can write this is x1, this is y1 and this is x2, this is y2. Same way in this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. And in general if you want to draw the figure, how you draw? First point, second point. So 2, 3 and the second point is 4, 1. So इन दोनों के बीच की distance निकालनी है. Same way this is a, b and this one point is minus a, minus b. You have to find the distance between these two points. So how we will find? Using distance formula. Okay. So how you will find the distance between these two points? Using distance formula. Okay. Same way we will write in this also.
using distance formula. Okay. So what is distance formula? You have to write very first. What is the, if I say this point is A, this point is B. So what is the length between AB is square root of x1 minus x2 whole square. Yeah. x2 minus x1 whole square. What you want to say? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So that means what is x2 here? 4 minus x1 2 whole square plus y2 is 1 minus y1 is 3 whole square. Okay. So now let us solve this. So how will solve? See. So this is square root of 4 minus 2, 2. So 2 square plus minus 2 square. So if it is negative also inside, so if we will do the square, it will become positive. So that means 4 plus minus ka square means positive. 2 to the 4. That means 8. And if we will just solve it, 4 to the 8, factorize it, और इसका 2 बाहर आ गया, so it is 2 root 2. So the distance between these 2 points is 2 root 2. Okay. Same way we will do that one also. Using distance formula, what is the distance between point P and Q? So PQ is equals to, अब मैं इसमें से x2 minus x1 करने के, अब मैं उल्टा कर लूँ, चलो x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So we can write in any of the way, both the ways, right? If you want to write x2 minus x1, that's also right. So that means what is x1? A minus what is x2? x2 is minus a. Okay, please don't be confused here. x2 is minus a. So iska whole square plus y1 is b minus is this one, and what is y2? This is minus b. So write in bracket. Okay, whole square. So don't be confused in this, because this minus is x2, this is x2 minus a, and y2 is minus b. Okay. So now solve this. What is the distance between PQ? It is a minus minus plus a whole square plus b whole square. That means the PQ is equals to 2a का whole square. That means 4a square plus ये 2b आ जाएगा अंदर, इसका square करोगे 4b square. So that means इसमें से square root of 4 common लिया तो you will get a square plus b square. 4 बाहर आके कितना हो गया? 2. So root a square plus b square. So this is the distance between the 2 points P and Q. Okay. So this is your first question. Second part you will do yourself, same like this. Okay. Let us start second question. So the second question is given to you that find the distance between the 2 points. These 2 points are given to you. Okay. So very first we have to find the distance between 2 points. Let this point is A and let this point is B. So let us x1, let us x2, sorry y1, and this is x2 and this is y2. So by using, and always you will write this one using distance formula. Okay. So what is distance formula? Distance AB equals to AB distance कितनी है? ठीक है. So that means you are given this point is A, this point is B, 0, 0, and this is 36, 15. Okay. So 0, 0 is, you know what is 0, 0? Origin. ठीक है, ये origin में है इसका मतलब. 0, 0 means ये origin में है. And this is some point outside. तो origin में अगर कोई point हो, उससे किसी point के distance निकालनी हो तो क्या होगा? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. What does it mean? अगर मैं कहूँ x1 minus x2 कितना है? 0 whole square plus y1 15, y1 I'm saying y1 minus y2 is 0 whole square. So what is the distance? x1 square plus y1 square. ये हो जाएगी. This will be the distance. So what is the distance between these two? That means 36 minus 0 whole square. That means 36 square plus 15 minus 0 whole square, that means 15 square. Okay. So find what is 36 square. So 36 square is 6 is the 36, 3, 6 is the 18, 6 is the 18. 18 to the 36, 39 का 9, carry over 3, 1296. ठीक है, 1296 plus 2 to 5. Then this will be 11, carry over 1, 19. 1521,
एंड दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1 है पीछे, तो 9 9 81 आता है या 1 1 1 आता है, सो इसका मतलब ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर रूट, 3 3 9 और 4 4 16 हो जाता है, तो 39 का है, डू इट, इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 39. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB इज 39 unit. Okay, so now look at here then. Second part is also there of this exercise. What is the second part? Okay, second part is, can you now find the distance between the two towns AB discussed in section 7.2? तो 7.2 में दो टाउन दिए हैं AB, उनके बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है. तो 7.2 सेक्शन इज दिस वन इन योर पेज नंबर 156. तो ये इसका फिगर दिया है एंड दिस द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू. वो क्या दिया हुआ है, अ टाउन A, a town B is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of a town A. टाउन A से जो टाउन B है वो 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और 15 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ है. ठीक है, तो ये इसका टाउन B की पोजीशन, दिस इज द टाउन B. So now the same figure will draw. So can you find the distance between these two towns? Obviously, तो हम कहेंगे let the town A is in origin. तो इससे 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ को ये पॉइंट होता है B. So the distance between these two you will find same like this. So the similar process will go on. It will also be 39 unit. Okay. So this was your question number 2. Now let us start third question. So quickly start. So the question number third is, determine if the points 1,5, 2,3 and -2,3 are collinear. Collinear means क्या होता है, एक ही लाइन में. ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है कि 1,5 then 2,3 and then -2, -11 आर कोलिनियर. तो हमें पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, मतलब तीनों एक ही लाइन में है या नहीं. ठीक है, so let me say this is point A, this is point B, this is point C. So what is the condition for collinear points? Look at here please. Solution. See, condition for collinear points is, क्या होना चाहिए, अगर मैं AB प्लस BC करूं तो हमारा AC के बराबर आना चाहिए. दैट मीन्स AB प्लस BC करें तो पूरा AC के इक्वल हो जाना चाहिए. अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है, सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. इसका मतलब क्या है, AB, सबसे पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकालो, फिर BC, फिर BC के बीच की डिस्टेंस निकालो. अगर दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों AC के बराबर होनी चाहिए. अगर नहीं है तो ये कोलिनियर है, नहीं है, इफ दे आर देयर तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट आई एम फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन AB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. यू विल राइट, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे पहले. आई एम डायरेक्टली राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो ये है x2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर. x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस किया, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस किया. ठीक है, इनका होल स्क्वायर कर दिया. सो दैट मीन्स 2 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 4 5 -2 बचा, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, प्लस 4. सो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब हम BC निकाल लेते हैं. ठीक है, सो लेट अस फाइंड द BC. इसके पहले ऊपर जनरल इक्वेशन यू विल राइट. ओके, सो BC इज, अब नाउ फाइंड दिस. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो. अब ये पॉजिटिव है तो इसमें से ये माइनस कर दो, बात एक ही है. सो 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y में से y माइनस करो, 3 माइनस ऑफ -11 का होल स्क्वायर. ठीक है, गेटिंग इट, 3 माइनस ऑफ -11. ठीक है, सो नाउ सॉल्व इट. 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 14, 14
का स्क्वायर 196. So this you will get 6 2 12 का 2 कैरी ओवर 1, 9 10 11 का 1 कैरी ओवर 1, 212. अब 212 को सिंप्लीफाई करो. 212 फैक्टराइज इट. 2 1 2, 0 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 53. तो 2 रूट 53 आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज 2 रूट 53. और नाउ फाइंड द डिस्टेंस AC. तो ये तो कैसे भी नहीं आएगा सेम. ओके, दिस विल नॉट कम सिमिलर. सो नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस AC. ओके, सो लेट अस फाइंड AC1. AC इज, अब नाउ ये x कर लो, ये दोनों, इन दोनों के बीच की करनी है. ठीक है, तो इसको x1, इसको xy1, इसको x2 y2. 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सो यू विल गेट 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 होल स्क्वायर. दिस यू आर गेटिंग ना x1 माइनस x2. तो 1 माइनस x2 है माइनस 2, तो 1 में से माइनस 2 को माइनस कर दिया. ठीक है, सेम है 5 में से माइनस करा माइनस 11 को, y2 माइनस y1. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू विल गेट 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 11 5 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256. तो ये हो जाएगा आपका 9 10 15 का 5 कैरी ओवर 1, 265. ओके, सॉरी, हाँ 365. So you can see it is not possible that AC and these two are equal. ये तो कैसे भी equal नहीं है. अगर हम √5 और √53 को ऐड करें तो वैसे ही ऐड नहीं हो पाएंगे. So what does it means? तो हम इसमें लिखेंगे. So we will write therefore AB plus BC और यहाँ पर AC they are not equal. That means AB was 5 √5 plus 2 √5 is not equals to 365. That means 6 √5 is not equals to. Now you can solve this also if you want. 365. So 5 से divide कर दो. 5 6 are 5 5 are 5 7 are 35. 1 5 3 are 15. तो 5 √73 आ रहा है. ठीक है, so these two are not equal. ये दोनों equal नहीं है, तो what the answer will be? So therefore A B C are not collinear points. तो आप कहेंगे therefore A B C are not the collinear point. Therefore A B and C are not collinear. ये collinear नहीं है. और कंडीशन क्या होती है collinear की? ये important question है. So many questions comes as collinear points. So please keep on remembering that AB plus BC should be equals to AC. Okay. So this was your question. Now let us start your next question, fourth question. Okay. So question number 4 is, you are given the 3 coordinates and you have to check whether these are the vertices of isosceles triangle. So let us draw one triangle. So I am drawing one triangle. Okay. Let me say this is point A, B, C. The first point is 5, -2. Second point is 6, 4 and the third point is 7, -2. तो आपको चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या नहीं. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज. ये लाइन की डिस्टेंस निकालो, इसकी डिस्टेंस निकालो और इसकी डिस्टेंस निकालो. इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल इन डिस्टेंस तो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट देखो, अब हम AC AB निकालते हैं सोल्यूशन. ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. वंस यू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला, that means x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, square root of. ठीक है, so now therefore I am finding the distance between AB distance कितनी है? 6 minus 5 whole square, 6 minus 5 whole square plus 4 minus -2 whole square. ठीक है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Solve this will come 1 square 1 plus 4 5 6 6 6 are 36 हो गया. So root of 37. तो ये डिस्टेंस आ गई √37. Now let me find BC. अब BC निकालो, कितना है? BC है
x में से x माइनस करना, y में से y माइनस करना, ठीक है। तो 6 में से माइनस करो 7 का होल स्क्वायर, देन प्लस 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज दिस? -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 6 का स्क्वायर 36, तो इट इज अगेन रूट 37। तो ये वाली साइड भी 37 आ गई। नाउ फाइंड AC। नाउ लेट अस फाइंड द थर्ड साइड AC। किसी में से भी कुछ भी माइनस कर लो। 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2, -2 में से माइनस करो -2, दैट इज होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स 5 6 7, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस -2 प्लस 2 0, तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स 2 आ गई इसकी, ठीक है। सो दिस इज 2। सो बिकॉज टू साइड्स, so we'll write as AB is equals to BC is equals to root 37. Therefore, it is an isosceles triangle. Okay, so this was your fourth question. So in this video we are doing till fourth question. Hope you like it. These are very simple question. I think you are also feeling that. So please do like and share and practice the question. From the fifth question we will start in next video. Till then, thank you very much. Keep on doing the question. Bye bye.